Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Sidra Faisal from CSS Aspirants School, and I warmly welcome you all in our today's second free online webinar for upcoming CSS PMS July batch. Dear aspirants, on the behalf of the CSS Aspirants School, I would like to express our dedication to providing exceptional mentoring and guidance to students aiming to excel in CSS PMS exam, because we firmly believe that every successful person started as beginner, and with the right approach and preparation, every aspirant can pass CSS. So most of you people are our old students जो का वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, और कल के जो लोग न्यू हैं उनके लिए कल के वेबिनार में हमारे स्पीकर्स थे CSP मिस Dr. Hifsa Batul और असिस्टेंट कमिश्नर मिस नीलम फ्रॉम 48th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी सक्सेस स्टोरीज के जो है ना उनके साथ शेयर किया, उनको CSS PMS की बेसिक्स के बारे में गाइड किया, कुछ उनकी जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड ऑप्शंस रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरीज को एड्रेस किया. So for today we are honored with three distinguished guests. First of all, Miss Maha, Diplomat Miss Maha from the 48th Common Training Program, who is serving in Foreign Services of Pakistan. Secondly, we have CSP Miss Aiman Ibrar from the 48th Common Training Program, who is serving in Postal Group of Pakistan. And thirdly, we have Assistant Commissioner Sir Aftab Azeem, who is serving in Inland Revenue Service. So stay tuned. First of all, I would like to invite Ms. Maha to share his insight, wisdom, to share his journey, gain wisdom and deepen understanding with you people. Ma'am, are you here? Hello, assalamu alaikum. Can you guys hear me? Yes. Yes, ma'am. Am I audible? Oh, okay. So I'm sure you had a very productive seminar yesterday, and I'll be building upon that. So for those who don't know me, my name is Maha Shafiq, and I'm from the 48th Common, just like Sidra mentioned, and I'm currently in the Foreign Service of Pakistan serving. So I'll be talking about, that's the most difficult question that CSS aspirants face in terms of subject selection, or in terms of starting your preparation. So I would recommend that you need a very directed approach when you're starting your preparation for any of the subject, be it compulsory subject or any of the optionals. You need to first, even if you're not going to an academy, right? So first you need to select the topics very, very carefully, or select the subjects very, very carefully that you're studying. Then analyze the past papers, at least for 4 to 5 years, and select the themes that, or maybe extract the themes from the same topics that have been repeatedly been asked by the examiner. So you'll get to know after this exercise that A, is the examiner more focused on the current aspects of this topic, or maybe some historical event that is being asked again and again from one angle or another. So that actually helps you narrow down your strategy and have a targeted approach. So I believe that's how you should start your preparation of any subject. When we talk about books, I do advise my students that if you have a lot of time, you can go for reference books, which is a list given by FPSC for each of the subject. But if you don't have that much of time, go for a guidance book that is being printed by
2 or 3 major publishers in the market that have actually compiled all these reference books and basically copy pasted most of the stuff into a single guidebook, which would give you, I would say, detailed insight on these subjects. So you can do that. And then there's a very important factor that you need to have a timetable. You need to set goals, set timelines on how on when you're going to complete a subject, when you're for exercises. You shouldn't be studying more in the last 2 months. Obviously, for current affairs, you'll keep on updating yourself for that period of time. But other than that, I believe your preparation for other subjects, compulsories and options, should end well before 2 months. So plan your timetable accordingly. Other than that, how to be distinct was one of another topic. My 2 cents on that topic is I believe that your expression or how you write your answers should be very direct, to the point. It should hit the nail on the head. Don't go into unnecessary details. Don't start writing the history about any of the topic that is being asked, because it would just waste the time, the paper, your energy. But the examiner requires whatever is being asked directly, right? So if let's say they've asked you about the administration, explain the administrative system of Assam with respect to maybe the 4 caliphs. So you don't have to start writing about how the administrative system was being managed at the time of the Holy Prophet, peace be upon him. So that's the difference, that I think most people make some mistakes, that they start from the very beginning and then waste the time, and you have a very limited amount of time when you're attempting 4 questions. You need to divide your time accordingly. I used to divide my time equally in the 4 questions, and I would stop writing immediately, even though on the first 2 questions are your best scripts, so you know a lot about them naturally. But you have to understand that all the 4 questions are have equal marks, so you have to give them equal time as well. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छा लिखा है तो 19 out of 20 देगा. That's never going to happen. He'll maximum grade you was give you a 16 out of 20. So that's I think my 2 cents on that. If you have any questions related to any query related to whatever I've said, or any other thing that you want to ask, maybe now is the time. You can also unmute yourself or ask in the chat box. I can read it from there and let you know. Okay, so duration is completely different for everyone. So for my experience, I was starting from scratch. So I gave it like good 7-8 months of extensive and intense, I would say, preparation. I wasn't doing anything apart from preparing for CSS. So I gave it my full time and attention period. So it depends. If you're on a job, it would take you a bit more time. If you have been studying about this exam for a lot of time and it was on your plan, bachpan se, to phir I believe people are have more knowledge on these subjects पे, and they can do it in a less amount of time. So it varies. अभी जैसे मैंने पाकिस्तान अफेयर सिलेबस का बताया, फॉर एनी सिलेबस आई थिंक बहुत ओपन एंडेड है CSS एग्जाम के सारे सिलेबस, बिकॉज एक
आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आपको कोई थीम्स नहीं बताए हुए कि किस एंगल से आपने पढ़ना है। तो हाउ टू नैरो इट डाउन इज कि आप एक तो उसके करंटली उसके क्या एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, अगर वो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है तो आपके पास एक वो एस्पेक्ट बन जाता है। फिर आप उस पर देखते हो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये 3 चीजों में आप डिवाइड कर लेते हो कि उससे क्या क्या आपके थीम्स निकलते हैं। या फिर आप उसमें हिस्टोरिकल देख लेते हो, या फिर फ्यूचर में अगर कोई चीज हो रही है जिससे वो रिलेट करता है, आप इस तरह के 4-5 थीम्स बन रहे होते हैं। तो जो मैं आपको पास्ट पेपर एनालिसिस का मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नैरो डाउन योर मटेरियल एंड अप्रोच। अच्छा, एनी टिप्स फॉर ऑप्शनल्स? ऑप्शनल्स के लिए अली, आई बिलीव गो फॉर योर स्ट्रॉन्ग फुटेज, जो आपने पहले बैचलर्स में पढ़ा हुआ है वो जरूर सब्जेक्ट्स उठाएं। एकेडमीज कुछ डिस्करेज करती हैं to not select subjects like accounting and finance and other of these economics हो गया, physics हो गया, because basically उनके पास यही चीजें होती है। But I believe अगर आपने 4 साल की डिग्री की हुई है जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं and you're confident, ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि 4 साल की डिग्री की हुई है लेकिन आपको भूली हुई है या you're not confident with the syllabus। उसका syllabus आप एटलीस्ट 5 साल के पेपर्स जरूर देखें, पास पेपर्स, और अगर तो आप you're confident with it then go for it। उसके अलावा फिर स्कोरिंग ट्रेंड थोड़ा सा देख लें, एंड वंस अगेन जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं सिलेबस और पास पेपर जरूर देखें कि आपकी खुद ही इंट्यूशन या गट फीलिंग जो है गाइड्स you on how to select the options। ठीक है, सब्जेक्ट फिलहाल से is it possible to prepare for special season in just 3 months? अच्छा फिलहाल I don't know where you stand अभी, तो just like I said, अगर आपने पहले से तैयारी दी हुई है, अगर आपने अच्छी तगड़ी तैयारी की हुई है तो yes 3 months में हो सकता है। आप रिफ्रेशर कोर्सेज ज्वाइन करके या क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करके आप जरूर कर सकते हो। So maybe go for mocks pehle and see where you stand, and if you can build upon that, do that. Okay, how we select the subjects, we'll talk about that. Recommended to quote books in each questions. It gives you brownie points अगर आप reference उनकी दे दें, not just books, अगर आप quotations, उसके अलावा if you quote add references from articles, from newspapers, from any other source, तो वो आपको एक extra added point देता है, and also it adds weight to your argument। अली, अगर आपकी स्ट्रेंथ है US history तो जरूर ऑप्ट करें। What were your my option subjects were international relations, criminology, sociology, US history and gender studies। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ दोनों में सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन मैंने इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सर्विस में आके पढ़ा है। इट्स अ गुड सब्जेक्ट। सो अगर आपका कोई बैकग्राउंड है उसमें तो डू गो फॉर दैट, दोनों आर फाइन। मैं ऑप्शंस में ये कहती हूँ कोई ऐसा गुड सब्जेक्ट या बैड सब्जेक्ट नहीं होता, लक आपकी होती है कि आपके साल आपकी दफा कोई भी सब्जेक्ट है हो सकता है, राइट। तो उसमें आप बस ट्राई ये करो कि आपकी इतनी तैयारी हो कि आप उसमें से अपने आप को सेव कर लो। Dawn के articles are also, they provide you a good data source जिसमें से आप facts and books पढ़ने से आपको theory मिलेगी, जो writing मिलेगी, go hand in hand। Okay, subject selection का I'm being told by Sidra के Aftab will
cover it. So I think ये सारे जो हैं आपके in detail जो हैं questions would get answered at that. Any other question? Or Sidra, do you want me to share anything else? Let me know. Sure, ma'am. अगर आपका complete हो गया तो no worries at all. बस students के जो questions हैं for the subject selection, students, tomorrow we are going to have a detailed webinar about the subject selection with Sir Aftab Khan and Ms. Zarmish. So कल का webinar आप लोग join कीजिएगा for subject selection. 1-to-1 interaction होगा, 1-to-1 counseling की जाएगी आप लोग की. So thank you very much, ma'am, for your precious time. Most welcome. Okay, everyone. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Okay. Sir Aftab, am I audible? Yes, Sidra, you're audible. Okay, ma'am. Sir Aftab want to announce something. Okay, students, please wait for Sir Aftab. He wants to announce something with you. I'm not sure about it, but we have to wait for him. Sir, are you here? Can you hear me? Yes, sir. Thank you very much. Actually, I was speaking, but unfortunately, my voice was not. I don't know why I was inaudible. देखिएगा, वेबिनार के बीच में बोलने का मकसद मेरा ये है कि 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ. I have been reading your chats. तो CSS के लिए आप लोगों से गुजारिश ये है, जो अप्रोच एक होता है, that is quite different. मिस एमन अगर टोटलिटी अप्रोच के बारे में बात कर रही हैं तो आप में पेशेंस इतना होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सर्विंग द कंट्री, कि आप उनको पहले सुने, उनसे कुछ सीखें. हमने हर चीज को ना एक कैटेगोरिकली आप लोगों के लिए सेट किया है ताकि हर डे में आप कोई ना कोई नई चीज सीख के चले जाए. मैम बात कर रही हैं वहां पे बिल फर्ज CSS ओवरऑल के बारे में. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि जनाब सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें. दिस इज वेरी रॉन्ग. आप प्रॉपर्ली उनको सुने, उनसे सीखें. अ गुड लर्नर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर. जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी. ठीक. आई वॉज पेशेंटली लुकिंग एट यू पीपल फॉर 2 days. आज मैंने कहा कि एज ए टीचर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं ताकि आप लोगों के लिए इसका फायदा हो. ठीक. और एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप इस चीज को समझेंगे और इस चीज को मानेंगे भी. और जब आप इसको मानेंगे तो आप लोगों को फायदा भी होगा. My apologies for the interruption. Thank you very much, Ms. Aiman. Thank you very much, Ms. Sidra. Thank you, sir, for your guidance. Okay, aspirants, now I would like to invite Ms. Aiman Ibrar, who is a prominent faculty member of CSS Aspirants School from 48th Common Training Program, serving in Postal Group of Pakistan. Her remarkable journey served as a wellspring of inspiration, resonating with individuals from every corner of life. So आप लोग को पहले भी इनसे फेमिलियर होंगे, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पहले वेबिनार्स अटेंड कर चुके हैं. फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग को ये प्रेसिडेंट कंपोजिशन भी पढ़ाती हैं. पाकिस्तान अफेयर्स इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता. और इसके अलावा मैम करंट अफेयर्स भी पढ़ाती हैं, तो क्लासेस में भी आपकी मुलाकात होगी. मैम, am I audible? Yes, Sidra, thank you for such a nice and kind introduction. Thank you, ma'am. Now the session is over to you. Okay, thank you very much. I hope I'm clearly audible to everyone. Yes, ma'am, you are. Okay, thank you. So welcome, my dear participants, and hopefully the future bureaucrats of Pakistan, if you play your cards right. I'm Aiman Ibrar, as Sidra introduced. I'm from 48th Common Training Program. I cleared my CSS in 2019 and I hail from Khyber Pakhtunkhwa. Acha, let's dive right into it. एक चीज
आप अपनी जिंदगी में जो भी स्टेप्स लेते हैं, आप अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लेते हैं, अभी अगर मैं ये फैसला लूं कि मैं आज का एक दिन या एक घंटा जाया करूं, या मैं कोई सिली डिसीजन बनाऊं करूं, एज कंपेयर टू कि मैं अपने हर दिन को और हर आवर को इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं, मैं जो हूं हर स्टेप एक एजुकेटेड डिसीजन के साथ लूं, ये दोनों चीजें, ये दोनों पाथ्स जो है, ये आपको अपने गोल की तरफ या अपने गोल के अगेंस्ट लेके जाते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू गाइज, यू ऑल आर वेरी मैच्योर, आप ऑब्वियसली यू आर अबव 20s, सारे इसी एज ब्रैकेट के हो जो सीएसएस में बैठना चाहता है। सीएसएस एग्जाम एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका पासिंग रेशो आप मुझसे ज्यादा, आप लोगों को पता है, तकरीबन 1%, 1.1%, बहुत बड़ा पासिंग रेशो हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो 1.9%. This means that 98% of people who sit in the exam, which is by the way a huge number of students या huge number of candidates, 14,000, 15,000, कभी 20,000, ये इसमें से सिर्फ 200 लोग हैं जो CSS कर पाते। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो लोग क्लियर नहीं कर पाते दे आर डम, या वो एजुकेटेड नहीं है, या उनको मेहनत करना नहीं आती, या वो मेहनत करते नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर गाइडेंस और कंसिस्टेंसी। आपकी अपनी मेहनत के बगैर और एक इफेक्टिव गाइडेंस के बगैर सीएसएस करना इन माय ओपिनियन इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ फार ऑफ ड्रीम। अब गाइडेंस मार्केट में बहुत मौजूद है, आपको पता है कि द मार्केट इज राइप विद एकेडमीज, इट इज राइप विद मेंटोर्स, एवरीवन teaches almost every subject out there. आपने अपना mentor या आपने अपना प्लेटफॉर्म कैसे सेलेक्ट करना है? Again, you have to be very logical about it. You have to be very smart about it. This is one of the first decisions. पहला डिसीजन जो आप बनाते हो वो ये कि मैं कौन सी एकेडमी या कौन सी मेंटोर के पास जाऊं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लाइफ अल्टरिंग डिसीजन आप करते हो वो ये होता है कि मैं सीएसएस में कौन से ऑप्शनल्स लूं। ये दोनों आपका फ्यूचर कोर्स डिसाइड करेंगे कि आपने एलोकेट होना है, आपने फ्यूचर ब्यूरोक्रेट या पाकिस्तान को सर्व करना है, आपने फ्यूचर सीएसपी बनना है या नहीं। ठीक, अब कैसे एक अच्छी एकेडमी सेलेक्ट करनी है? आपने देखना है कि उस एकेडमी में इंडिविजुअल अटेंशन कितनी मिल रही है। ठीक, उस एकेडमी में क्या वो वही रटी रटाई चीजें हमें पढ़ा रहे हैं, या वो हमारे जो है हमें ऑर्गेनिकली बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। Now, what does it mean organically build? CSS में प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन चूंकि मैं पढ़ाती हूँ, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन और एसे में बहुत रिकॉर्ड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दे फेल, रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल। अब अक्सर उनमें से वोकैबुलरी उनकी बहुत कह लें अच्छी होती है, अच्छी कंटेस्टेड, उनको इतने बड़े मोटे मोटे वर्ड्स यूज करना आते हैं, या वो यूज करते हैं, उन्होंने रटे होते हैं, क्योंकि काफी मेंटोर्स कहते हैं कि बस वर्ड्स रट लो और ये ईडियम रट लो और ये सेंटेंसेस एज इट इज याद कर लो और ये पेपर में लिख लो। मैंने बहुत जगह देखा है। Since I was an aspirant myself, I was a CSS candidate not so long ago. I appeared in 2019. I cleared it in my first attempt. And I saw so many people with me, so many smart people who could not clear it. मसला किधर आ जाता है? एग्जामिनर ये काम जो है वो 15 साल से 20 साल से कर रहा है, वो आपका एक पैराग्राफ पढ़ के समझ जाता है कि आप कितने पानी हो। Are you sitting over there posing like someone else? आपने किसी और के सेंटेंसेस रटे हुए, आपने किसी और के वर्ड्स रटे हुए और आप वो एज इट इज पेपर में लिख रहे हो। आपकी इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन, ठीक है, वो आपका अपना इंटेलेक्ट नहीं है। सही, आपको कहीं से भी वो रटा रटाया नोट्स मिले हैं, या जो आपने लेक्चर में सुना है या जिसने पढ़ाया है, जिसने आपको वो फीड किया है, आप वही लिख के आ रहे हो, आपको वो समझ आया प्रॉपरली नहीं आया, यू सिट इन द एग्जाम एंड यू डू इट एंड देन यू फेल। This is the story of 98% of the candidates who appear in CSS. You have to be yourself. अब आप yourself कैसे होंगे जब आप कहते हैं कि मुझे ग्रामर भी नहीं आता, मुझे करंट अफेयर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता, मुझे ना पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में पता है, मुझे ऑप्शनल्स के बारे में नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर कैंडिडेट जो अपनी CSS की जर्नी करता है, स्टार्ट करता है, तो उसको आइडिया नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है।
दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, प्रेसियन कॉम्पोजिशन, इस्लामिया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, सिर्फ कंपल्सरीज अगर आप देख लें तो हर एक सब्जेक्ट इज अ वास्ट फील्ड इन इटसेल्फ. तो हाउ कैन यू नो एवरीथिंग without even studying it, without even working for it, without even being guided on it? ठीक. अब कास का या CSS एस्पिरेंट स्कूल का जो बेसिक मोटो है वो है टोटलिटी अप्रोच. इट बिल्ड्स यू राइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड अप. ठीक है, आपकी फाउंडेशंस डेवलप करना, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना. यू वोंट बिलीव इट, इस एकेडमी में आपके शायरी के स्किल्स को भी अच्छा किया जाता है फॉर हु इज इंटरेस्टेड, आपके लिटरेचर के स्किल्स को भी अच्छा किया जाता है फॉर हुएवर इज इंटरेस्टेड, आपकी हर पर्सनैलिटी के हर हर एस्पेक्ट को टच किया जाता है, उसमें उसको पॉलिश किया जाता है. अब ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? आप जो है आप शॉर्ट साइटेड हैं क्योंकि यू आर यंग, you are appearing for the first or second time, you don't have experience. We, the mentors who are sitting here, हम जो है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि आप रिटन तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स होपफुली इंशाल्लाह, बट जब वो इंटरव्यू में बैठेंगे तो उनकी पर्सनालिटी इतनी रिफाइंड होगी, उनकी पर्सनालिटी में इतनी डेप्थ होगी, उनकी पर्सनालिटी में इतने डिफरेंट एंगल्स और कलर्स होंगे कि द एग्जामिनर या द पैनलिस्ट्स आर गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड देन एंड देयर. और फिर उनकी एलोकेशन. तो आपका सफर हमारे साथ सिर्फ रिटन तक का नहीं है, आप जो हमारे साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग करते हो, आप जो हमारे साथ अपने इंटेलेक्ट को शार्पन करते हो, विट को और बेहतर करते हो, वो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन द रिटन एग्जाम, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन द इंटरव्यू एंड मे बी आफ्टर व्हेन यू गो टू द सिविल सर्विसेज एकेडमी. अच्छा, टोटलिटी अप्रोच के ऊपर और बात भी की जाएगी इन दिस वेबिनार एज वेल, लेकिन अगेन ऑर्गेनिकली बिल्ड करना, आपका एक एक कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड करना. फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टीचिंग प्रेसियन कॉम्पोजिशन, तो मैं हर एक कैंडिडेट को, हर एक पार्टिसिपेंट ऑफ द क्लास को गेज करती हूँ प्रॉपरली. ये पार्टिसिपेंट को कितनी इंग्लिश आती है, ठीक, इसकी रीडिंग स्किल्स कितनी है. फिर मैंने हर किसी को उसके अकॉर्डिंग एक बुक असाइन की है, या मैंने क्लास का एक कॉमन नॉलेज का लेवल गेज किया थ्रू अ नंबर ऑफ क्विजेस, थ्रू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप एक लेवल गेज करते हो कि इस क्लास में हर किसी का ये लेवल है. आप फिर उसको इंडिविजुअल फीडबैक भी देते हो और फिर मैं उनको अकॉर्डिंगली कोई बुक असाइन करती हूँ. उस बुक के थ्रू व्हेन दे आर रीडिंग दैट बुक, देन दे टेल मी व्हाट दे रेड इन दैट बुक. आपकी रीडिंग स्किल भी हो रही है, आपको आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर हो रही है. कैसे कि आप वापस आते हो क्लास में, मुझे दोबारा बताते हो कि आपने उस बुक में क्या पढ़ा, 10 पेजेस पढ़े, 20 पेजेस पढ़े, व्हाट डिड यू रीड इन द बुक, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड. फिर कहीं पे दे हिट एंड कहीं पे दे मिस. फिर मैं उनको समझाती हूँ कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कॉम्प्रिहेंड दिस बुक, डीपर मीनिंग इस किताब का ये है, एटसेट्रा. देन अगेन आपका सिर्फ प्रेसियन कॉम्पोजिशन नहीं होता, आपका ग्रामर का इन डेप्थ एनालिसिस होता है, आपको ग्रामर इन डेप्थ सिखाई जाती है, ईच एंड एवरीथिंग. फिर कॉन्टिन्यूअस क्विजेस. अब इस तरह के क्विजेस नहीं कि आप क्लास में बस क्विज कर लो, वही इंटरनेट से या कोई बुक है और उससे छापी दी है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्वेश्चन है, उनके आंसर्स भी पता है, कोई फायदा नहीं है. क्विज प्रॉपर एट द स्पॉट एंड देन इंडिविजुअल फीडबैक सेशंस. इंडिविजुअल फीडबैक सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि मैं गलती, एक तो आपके पास देखिए, मैं आई हैव बीन अ स्टूडेंट एज वेल जस्ट लाइक यू गाइस, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जब आप एक प्रेसी लिखते हो या आप एक ऐसे लिखते हो या एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो यू ट्राई टू गिव इट योर ऑल, अपनी तरफ से आप उसको बिल्कुल परफेक्टली करते हो, आपने रिसर्च भी किया होता है, बड़ी मेहनत की होती है. अब आगे से उसके ऊपर रेड कांटे आ जाए या गलतियां आ जाए और आपके पास वापस आए, तो एक तो यू गेट अ लिटिल सैड, दूसरा थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है कि यार मैंने इतनी तैयारी की है, ये क्या फजूल में कांटे लगा दिए और ये क्या क्वेश्चन. अगर आपको कोई बिठाए और आपसे कहे कि देखो इसमें ये गलती है, इसको आप ऐसे बेहतर कर सकते हो, इस पैराग्राफ में आपने ये इश्यूज हैं आपके, आपका कॉम्प्रिहेंशन का ये मसला है, मतलब आपने टॉपिक समझा है या नहीं समझा, टॉपिक को प्रॉपरली आपने कैसे एनालाइज करके उसका जवाब देना है, उसके आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है, किस तरह एक वेल राउंडेड अप्रोच होगी, एटसेट्रा. ये सारी चीजें जब आपको इंडिविजुअली कोई फीडबैक दे, आपके प्लस पॉइंट भी बताए, आपका स्ट्रेंथ भी बताए और आपका वीकनेस भी बताए, उसके बाद वो फीडबैक सेशन लेके आप वापस घर जाओ, यू अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है. आपका ये जो उदासी या आपका गुस्सा है वो आपकी इस वजह से है बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग.
ठीक, जब तक आपको कोई बिठा के समझाएगा नहीं कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू मेक इट राइट, देन यू गो बैक, यू मेक इट राइट एंड यू कम बैक एंड देन यू डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक, बिकॉज आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि मेरी उस पर्टिकुलर जो मैं चीज कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ या प्रेसी कॉम्प्रहेंशन का पैसेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मेरा इशू क्या है, फिर आप वो इशू रिपीट नहीं करते. So you get individual feedback sessions from me, from all the other mentors. अब इसका फायदा तो obviously there are a number of ये individual feedback sessions you do not get them. मैंने भी academies देखी है, I was a candidate like you. So you do not get them easily. This is not something that our students as well and the new students that are incoming should take for granted, because यहाँ पे आपको सिर्फ teaching नहीं हो रही, आपका एक mentorship program है. Mentorship is कि when we take you under our wings और हम आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप along the way गाइड करते हैं, एक एक स्टेप पे समझाते हैं कि नहीं, this is where you going wrong. इसके अलावा आपके स्केड्यूल सेट करना, आपके टाइम टेबल सेट करना, आपको एक्सप्लेन करना कि इस टाइम पे ये, इस सब्जेक्ट को इतना अटेंशन दो, इस सब्जेक्ट को इतना अटेंशन दो, all of this is done in CAS. And for this batch, especially for the July batch, we have designed a special. आप जुलाई में जब हमारे साथ enroll होंगे till February, you will be under our mentorship program. इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको हर स्टेप पे गाइड किया जाएगा, हर स्टेप पे आपको मोटिवेट किया जाएगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आता है, मोटिवेशन फॉर स्टडी. हाउ डू वी कीप स्टडीइंग, बिकॉज इट्स 6 months, आपको पता नहीं है कि जो ये रोड है, ये जो टनल है, इसके एंड पे क्या लाई कर रहा है. बिकॉज ऑब्वियसली CSS जो है आपका क्लियर हो गया तो आप के मजे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती. आपको आपके तकरीबन 1-2 साल तो जाया हो ही जाते हैं, क्योंकि आप 6 महीने पढ़ रहे हो, फिर 6 महीने आप CSS का या 6 से 7 महीने मेरे ख्याल से रिजल्ट का इंतजार करते हो. फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता नहीं होता तो 1 साल जाया हुआ, वरना तो आपका इंटरव्यू में जब सेलेक्ट हो जाओ, फिर इंटरव्यू में एलोकेट ना हो तो आपके तकरीबन 2 साल जाया हो जाते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं आता. कैसे आप उस 1 साल को या 2 साल को जाया होने से बचाओगे? थ्रू एन इफेक्टिव मेंटोरशिप प्रोग्राम. ठीक, well enough I think about our mentorship program. You'll get to know it better जब आप trial classes लेंगे, when you will be a part of this team that we are building, a team for the future bureaucrats of Pakistan. अच्छा, again some tips that Sidra asked me to give you guys were कि कोई 4 या 5 tips मेरी journey से, मेरी CSS journey से, because obviously first attempt में clear करना is comparatively harder. लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, 6 महीने 5 महीने, अब तो आपके पास तकरीबन 5 months रह गए हैं. तो इस लिमिटेड टाइम, हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस टाइम. पहली बात तो ये है कि what I learned from my journey, what I learned from my seniors, what I learned from a number of my batchmates was consistency is the key. I cannot stress this enough. ये नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ा तो अगला पूरा हफ्ता आपने पढ़ा ही नहीं, फिर एक दिन जो है आपने 6 घंटे पढ़ा तो 2 हफ्ते फिर नहीं पढ़ा. You have to be very consistent. For example, अगर आपको पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, आप तो you have to be consistent in the sense कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपने न्यूज़ देखनी है, आपने अपने आप को you have to keep up to date with whatever is happening in the world and in the country. उसके अलावा आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं पहले, उनको you have to learn them and then you have to keep revising them कि आपको obviously facts हैं, आपकी analysis है, इन सबको एक बार पढ़ने से, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ने से या एक बार न्यूज़ देखने से ये चीजें नहीं आती. फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत आपका कंपटीशन जो है, it is with very smart people who have studied hard, who have worked hard their whole lives, people who are coming from many esteemed universities, even people who are studying in universities, who are studying political science at Harvard or Oxford या Columbia. ऐसे लोगों के साथ भी आपका competition होगा when you sit in the exam. एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगेन एक और टिप जो मैं आप लोगों को दूंगी, ओके, आई विल गेट टू द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है. अच्छा, एक और जो मैं आपको टिप दूंगी, जस्ट सिट डाउन टुनाइट, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन, उसमें सफे के बीच में लाइन लगाएं, एक तरफ लिखे स्ट्रेंथ्स, एक तरफ लिखे वीकनेसेस, एनालाइज योर ओन सेल्फ. आप एनालाइज करें कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक, यू आर अ वेरी गुड राइटर,
या you have an impeccable grammar, या you're a very good reader, या आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत पता है, या जो है आपकी मेमोराइजेशन स्किल्स, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप एक बार कोई चीज पढ़ो या 2 बार तो आपको याद रह जाती है, या आपको न्यूज पढ़ने सुनने का बड़ा इंटरेस्ट है, या आप जो है डिस्कशन में बड़े अच्छे हैं, आप वो बहस मुबाहिसा जिसको हम कहते हैं उसमें बड़े अच्छे हैं, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं लोगों को काउंटर करने के लिए, जिसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर एन एस्पिरेंट फॉर अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट। फिर आप, या आपके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस के स्किल है बहुत, आप हर each and every one of us is blessed with a number of skills। अब कुछ blessed हुए, कुछ हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर डेवलप किए, ठीक है, ये आपके स्ट्रेंथ्स हैं। फिर आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें, बहुत वीकनेसेस होते हैं, आप जो है आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, अगेन आप चीजें याद नहीं रख सकते, आपको ऐसी चीजें चाहिए जो ज्यादा लॉजिकल इन नेचर हो। फिर यू कैन नॉट राइट वेल, या आपका क्रिटिकल एनालिसिस वीक है, आपका ग्रामर वीक है, या आप रीडिंग से तंग हो जाते हो, बोर हो जाते हो, आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो। फिर आपका गोल ये होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अंटिल यू अपीयर इन एग्जाम कि अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना है, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर और काम करना है, और अपनी वीकनेसेस को भी अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रेंथ आपका सुपर स्ट्रेंथ हो जाएगा और वीकनेस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू योर स्ट्रेंथ्स एज वेल। You are going to play against all odds. You are going to compete against 20,000 people. How are you going to stand out? By playing your strength, by ensuring कि आपकी weaknesses ना रहे। तो जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करोगे, जब तक आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक आप अच्छी तरह से अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। ये इम्प्रूवमेंट, आपके स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना, आपकी वीकनेसेस को भी स्ट्रॉन्ग करना, वी आर हियर फॉर यू, वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू हेल्प यू डू दैट। ठीक, थर्ड पॉइंट जो मेरा, थर्ड टिप जो मेरा है आप लोगों के लिए, दैट इज रीड। बच्चों, रीड विद लव। ये नहीं है कि आप जो है बस मजबूरी है तो कोई किताब उठाई, 2 सफ़े इधर उधर किए, फिर रख दी, फिर फोन पे स्क्रॉल किया। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल, मेरा एक रूल होता है जब मैं पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, तो आई हैव वन रूल कि आप, यू कैन नॉट गो टू बेड विदाउट reading 5 relevant articles. कोई भी articles, I'll teach you this rule when you study with me current affairs या Pakistan affairs, because I used to do this and it helped me a lot in building my analytical skills. खैर 5 वाला रूल था मेरा, 5 आर्टिकल्स पर डे का। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केम टू मी के हमारे पास कैसे टाइम होता है आपके पास, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। Look guys, I was you guys a few years ago. I know you. मुझे पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं आप लोग थी a few years back when I was studying, when I was preparing for CSS. मुझे पता है कि इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में आराम से 1 घंटा गुजार देते हो। मुझे पता है कि फेसबुक पे या यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते, नेटफ्लिक्स देखते या ड्रामे देखते हुए, मूवीज देखते हुए आराम से 2 घंटे 3 घंटे आप दिन में जाया कर देते हो। इट इज नॉट अ बैड थिंग। एंटरटेनिंग योरसेल्फ, रिफ्रेशिंग योर माइंड इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। यू अर्न इट आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, बट आप अपनी एंटरटेनमेंट को आर्टिकल्स के तौर पे, आप बुक्स के तौर पे यूज करो। ठीक, ये जो 4-6 महीने 5 महीने आपके पास रह गए, इसमें अगर आपकी माइंड में आपके ओढ़ना बिछोना जब तक CSS पास करना नहीं बन जाता, तो आई एम सॉरी टू ब्रिंग यू दिस बैड न्यूज, बट यू कैन नॉट क्लियर इट। यू हैव टू बी फुली कमिटेड टू द कॉज। ठीक, जब तक आप फुली कमिटेड नहीं हो, आपकी एंटरटेनमेंट भी CSS से रिलेटेड हो, ठीक है, आप अपना वो वर्डल या वो वर्ड्स वाले गेम्स खेलो अगर गेम खेलने का दिल कर रहा है, ठीक है, अगर कुछ एंटरटेनमेंट का दिल कर रहा है तो अल जजीरा के ऊपर वीडियोस देख लो। यूट्यूब में VOX है, वॉक्स एक चैनल है जिसमें काफी करंट अफेयर्स के बारे में बात होती है, वो देख लो एंटरटेनमेंट के लिए। कोई भी फरीद जकारिया का CNN के ऊपर शो देख लो, या द डिप्लोमैट फॉरेन पॉलिसी मैगजीन उठा के पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ो, ये आपकी एंटरटेनमेंट हो तो बहुत अच्छा है। शाम को एक टाइम वॉक कर लो, फ्रेंड्स फैमिली से बात कर लो, लेकिन उसके अलावा आपकी एंटरटेनमेंट भी इसी तरह की हो, आपके डिबेट्स, आपके फ्रेंड्स के साथ बातें, आपकी फैमिली के साथ बातें डिफरेंट हॉट टॉपिक्स के ऊपर हो, कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस या वाटर क्राइसिस, या हम एनर्जी कितनी वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे सोसाइटल क्या इश्यूज हैं, इसको एड्रेस कैसे किया जाए, इनके वे फॉरवर्ड क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। इस तरह की बातें, इस तरह की इनलाइटेंड डिस्कशन, इस तरह की सोचें आप लोग रखेंगे तो ही आपका
आगे कुछ हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ होल, अगेन आई सेड यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनिक इन योर अप्रोच, यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम फाउंडेशन एंड अप. अच्छा, रीड हो गया. फिर again, very important point, get proper guidance. Without proper guidance you are like a headless chicken. जब चिकन को ज़िबा करते हैं ना तो उसका सर जब कट जाता है ना तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसे जंप वगैरह मारती है या मारता है. आप लोगों ने देखा होगा जो लोग चिकन वगैरह खरीदते हैं, सब नहीं देखा, इट्स कॉमन नॉलेज. उसको पता नहीं होता, उसका तो चूंकि सर नहीं होता, इट्स ऑलमोस्ट डेड, तो वो ऐसी छलांगे मार रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है. आपको जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप वो बगैर सर वाला चिकन हो. आप इधर से उधर जंपे मार लो, कुछ भी नहीं होना, ठीक है, वापस आपने कहीं पे भी नहीं पहुंचना. यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड इन योर अप्रोच, यू हैव टू गेट प्रॉपर गाइडेंस. और गाइडेंस भी यू हैव टू, अच्छा, वीकली डिबेट्स आपके होते हैं. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. हर संडे आपका एक प्रॉपर डिबेट होता है CSS एस्पिरेंट स्कूल में. मैं पहले जो है when I was preparing, I did not have this kind of a platform. I'm really unlucky in that. I wish CSS aspirant school was at the time when I was studying, when I was preparing, because एक चीज जो मुझे इस academy की सबसे अच्छी लगी, they have debates every Sunday. मैं जब डिबेट्स का, चूंकि आपके क्रिटिकल एनालिसिस का स्किल जो है वो तब तक डेवलप नहीं होता जब तक आप प्रॉपरली डिबेट ना करो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ. तो व्हाट आई वुड यूज टू डू इज कि मैं अगर सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी या मैं अपने साथ रूम में बैठी होती थी तो आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ. अच्छा, साउथ कोरिया में ये इशू हो रहा है, साउथ कोरिया की मिलिटराइजेशन हो रही है, या इंडियन ओशन में ये हो रहा है, यूएस जो है इंडिया को मिलिटरीली बैक कर रहा है, तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इंडिया को क्या फायदा है, यूएस क्यों कर रहा है, चाइना को कैसे इसके ऊपर, चाइना कैसे अफेक्ट होगा, पाकिस्तान की क्या अफेक्ट है, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, इसके ग्लोबली जो है जो आपका पोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड है, योर वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ेगा. इस तरह के आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ, बिलीव इट और नॉट. एंड देन आई यूज्ड टू लुक अप आर्ग्यूमेंट्स कि अच्छा इसमें ये आर्टिकल ये कह रहे हैं, ये आर्टिकल. देन आई यूज्ड टू बिल्ड दोज आर्ग्यूमेंट्स विद माई सेल्फ. फिर मैं खुद ही अपने आप को एनालाइज करती थी कि एम आई डूइंग दिस राइट. मैं अब मेरे पास कोई था नहीं कि वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करे, वो मुझे बताए कि नहीं ये आर्ग्यूमेंट वीक है, इसमें ये गलती है, इसका ये एंगल देखो, या मुझे कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है. यू गेट दैट हियर. You have a full-fledged deal over here. You come every Sunday, you sit with your peers, you sit with your mentors and you debate a topic. आप बात करते हो कि ये जो IMF की डील है, ये क्या ये अच्छी है, इसके कोई फ्यूचर के गोल्स हैं हमारे लिए या नहीं, ये पाकिस्तान के लिए वे आउट है या कोई और वे आउट है. फिर everyone comes so well prepared. I'm so proud of my students who come to these debates. इतने वेल प्रिपेयर्ड, इतने इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स. देन यू हैव योर मेंटोर्स, सर आफ्ताब खान मूसा होते हैं या आपके और मेंटोर्स होते हैं. समटाइम्स आई एम देयर, समटाइम्स ऑल ऑफ योर मेंटोर्स आर देयर एंड वी ऑल आर डिबेटिंग. तो आप ये सोचो कि एक 12 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की डिबेट हो रही है. ईच वन ऑफ देम इज वेरी वेल रेड. कोई आपके जो है आफ्ताब साहब जो है ही इज IR स्पेशलिस्ट. फिर आपके डिफरेंट हर मेंटोर जो है, आपका CSP भी है, आपका स्पेशलिस्ट भी है, वो आपके साथ डिबेट करता है, आपको बताता है ये आर्ग्यूमेंट आपका बहुत अच्छा है, इसको ऐसे पॉलिश करो, इस आर्ग्यूमेंट में आपके ये इश्यूज है, ये फ्रेश पर्सपेक्टिव है. दे गिव यू फ्रेश पॉइंट्स एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव्स. देन दे रिव्यू बुक्स फॉर यू. आपको बुक अलॉट की जाती है कि आप ये बुक पढ़ लो, डेमोक्रेसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, एंड देन जो दुनिया में ग्लोबली हो रहा है किसी ना किसी टॉपिक के, योर असाइन बुक्स जो आपको PDF में मिलता है, एंड देन you discuss that book. अच्छा मैंने इसमें ये पढ़ा. Sometimes रियलिस्टिकली आपने वो किताब नहीं पढ़ी होती, ठीक है, आप कुछ नहीं पता, आपने ना किताब पढ़ी, आप जाके सिर्फ डिबेट में बैठ जाते हो. अब हर तरफ से everyone is talking in such a civilized way, presenting such great arguments. Then your mentor is correcting them. Then your mentor is giving you a number of other insights. आप बैठ के सिर्फ सुन भी लो ना, तो it is such an enlightening session. You learn everything about the book and some more. तो मतलब फ्री में आपके पास नॉलेज आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डिबेट. अच्छा मैं ये पॉइंट प्रेजेंट करूंगी, वो पॉइंट प्रेजेंट करूंगी, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को ऐसे काउंटर करना है. ये हो क्या रहा है बेसिकली, आपकी एसए की तैयारी हो रही है, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, आपकी IR या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हो रही है, आपकी पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी हो रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है. आप इंटरव्यू में जाके बैठ के उधर बात करो पैनलिस्ट के सामने, वो आपको कोई बात, आपका आर्ग्यूमेंट गलत हो, आपको ऐसा वो गिराते हैं कि यू लाइक ओ माय गॉड व्हाट डू आई डू नाउ.
अगर आपने डिबेट्स नहीं किए होते, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, यू कैन नॉट काउंटर वट एवर दे आर सेइंग. Have to build that confidence. Again, confidence हमेशा knowledge से आता है. ये जो आपका इस तरह का ये जो एक सबसे ज्यादा जो इंसान है जिसको कुछ नहीं पता होता ना, एक वो कॉन्फिडेंट होता है जो फॉल्स कॉन्फिडेंस के ऊपर बना होता है, एक बड़े हाई ग्राउंड बैठा होता है वो इंसान, और फिर वो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है. एक कॉन्फिडेंस एक वेल रेड एक वेरी इंटेलेक्चुअल कैंडिडेट का होता है, जो हु नोज कि वो जिस ग्राउंड पे बैठा है वो ग्राउंड प्रॉपर सीमेंट की ग्राउंड है, वो ग्राउंड नहीं गिरेगी, बिकॉज उसको पता है कि आई हैव रेड, उसको पता है कि आई हैव वर्कड रियली हार्ड, उसको पता है कि आई हैव वर्कड ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ माय आर्ग्यूमेंट, आई हैव लिसन्ड टू अदर्स. एक अच्छे कैंडिडेट की फॉर सीएसएस एंड फॉर ब्यूरोक्रेसी, एक अच्छे कैंडिडेट की यही पहचान है कि उसको पता हो कि मैंने कब सुनना है और कब बोलना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने सुनना बहुत है क्योंकि आपको सुनने से नॉलेज आता है, फिर आपको सुनने से ये भी पता चलता है कि ये गलत है और इसको ऐसे ऐसे ठीक किया जाता है. देन यू इवैल्यूएट एवरीथिंग इन योर ब्रेन. Start using your brain. When you listen, use your brain and then speak. ठीक और right. Getting my point? You have to process it all over here. इसको इस्तेमाल करना शुरू करो. जब इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बेहतर से बेहतर लिखोगे. फिर आपको CSS क्या कि दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर with flying colors, nobody can stop you. ठीक. अच्छा, लास्ट पॉइंट, मेरा मोनोलॉग कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, बट लास्ट पॉइंट जो मेरा लास्ट टिप है, it is very simple, and that is study. Study, guys, and study hard. Make sure every minute from now on is well spent. ठीक. आप जो है I've seen there were candidates with me. I respect everyone, but मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि गलतियां किधर होती है, क्योंकि अगेन मैं ये बात बार बार रीइटरेट कर रही हूँ कि I was you guys just a few years ago. ठीक. तो तो मेरे साथ लोग थे जो एक एकेडमी में भी एडमिशन लिया था, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी. मतलब मैं डर जाती थी कि यार ये ऐसे जो है 4 जगहों से पढ़ रहा है, यार 5 जगहों से पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स 6 जगहों से पढ़ रहा है, तो मतलब क्या होगा. और मैं आई जस्ट ज्वाइन वन प्लेस दैट आई डिडंट इवन लाइक. फिर आई गॉट माई सेल्फ अ मेंटोर और फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, स्पेंट ईच एंड एवरी मिनट स्टडीइंग, और फिर मुझे समझ आई एंड दे कुडंट क्लियर, क्योंकि वो एक बहुत सारे कश्तियों के सवार हो गए थे. दे स्पेंड ऑल देयर टाइम इन क्लासेस. इधर क्लास लो, उधर क्लास लो, इधर करो, ट्रैवलिंग टाइम अलग, पढ़ने का तो कोई टाइम ही नहीं रहा. ठीक है, दिमाग में प्रोसेस करने का कोई टाइम ही नहीं रहा. आजकल तो इट इज पोस्ट कोविड वर्ल्ड. कोविड का हमें एक गिफ्ट मिला कि इसने हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे दिए. Online platforms, I am sitting here, you guys are sitting in the comfort of your homes. You can get your pen, you can get your pencil and your page and start studying right now. Start writing whatever I am saying. फिर उधर ही आराम से बैठ के अपना फर्दर स्टडी करो. कोई ट्रैवल टाइम नहीं है आपको, कोई टाइम जाया करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, थके आप नहीं होंगे, क्योंकि आप आराम से क्लास तो अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के उसी क्लास को प्रोसेस करो, उसी के नोट्स कंप्लीट करो, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, उसी टाइम टीचर को चेक करवा लो. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बहुत फायदे हैं. पोस्ट कोविड वर्ल्ड, लाइक वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ कोविड, आई एम सॉरी टू से, कोविड वाज वेरी lethal. COVID was very harsh for all of us, for our economies, for our lives, for our loved ones. But one thing, the world always improvises. तो what it provided us was these online platforms, जो हम अपने comfort में बैठ के पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं. Then we can like not waste time and study. So that's that. My last tip was to study and study hard and make sure every minute counts from now on. आपके इधर वीकली जो है ऐसे भी चेक होते हैं, आपके प्रेसी कॉम्पोजिशन, क्योंकि मैं पर्सनली देख रही हूँ, आपके डेली के असाइनमेंट्स होते हैं, उनका फीडबैक होता है, फिर आपके इंडिविजुअल फीडबैक सेशंस होते हैं. देन अगेन यू आर कनेक्टेड टू योर मेंटोर्स 24/7. आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आई हैव माय स्टूडेंट्स सेंडिंग मी इंडिविजुअल असाइनमेंट्स, प्रेसी की भी, पाकिस्तान अफेयर्स की. आई एम चेकिंग देम, आई एम गिविंग देम टाइम इंडिविजुअली. Similarly for our essay teacher Sir Aftab, he is giving each and every student
अलग अलग टाइम, ठीक है। उनकी मॉक चेक हो रहे हैं, मैडम हिफ्सा है हमारे पास, मैडम जरमिश हैं, ईच एंड एवरी वन एंड अ नंबर ऑफ अदर वेरी टैलेंटेड मेंटोर्स एंड टीचर्स जो कि आपको इंडिविजुअल टाइम दे रहे हैं, आपके मॉक्स चेक कर रहे हैं रेगुलरली। ये नहीं कि आपने मॉक दे दिया और बस कोई फजूल सा रिजल्ट आ गया, आपको पता भी नहीं है कि मार्क्स मुझे क्यों मिले हैं, इसमें गलत क्या है, ठीक क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आपके जब इंडिविजुअल फीडबैक सेशन होते हैं, आपके जब इंडिविजुअल एनालिसिस होता है, दैट्स व्हेन यू रियलाइज, अगेन आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑन दिस टॉपिक कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए फीडबैक सेशन। तो ये मॉक्स, ये ऐसे इवैल्यूएशंस, आपकी राइटिंग की इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स या इस सब की इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो या आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस नाउ। Okay, someone asked, past CSS screening test on 21st May 2023. Now I have less than 3 months. How can I prepare myself for do and die situation? Okay, I really like your vigor. I really like the way you are very serious about the cause. आप बहुत committed to the cause है कि मैंने ये करना ही है. Well appreciated, well taken. Again, 3 महीने कम है लेकिन impossible नहीं है. I am going to suggest you कि hop on, join this platform. आपने I think CSS special exam में appear होना है. We have special classes going on for CSS special exam. हम आपको जरूर cater करेंगे. We are going to help you on each and every point of your journey and inshallah you will clear it. Don't worry. Start reading. कल का जो आपका वेबिनार है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ाई शुरू कर दो, क्लासेस ज्वाइन कर लो और पढ़ना शुरू कर दो. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू clear your exam. Acha. This session only for 2024 as I have to graduate in 24 and I want to attempt 25 with do or die game. Acha Noor, this session is going to continue. आपका this is an ongoing thing ना, ये एक बार तो नहीं है. We have been taking students, हम आगे भी करते जाएंगे. Make sure कि you stay connected. आप जो है तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप रजिस्टर कर लो कि मुझे वीकली डिबेट्स में, या आप 1-2 सब्जेक्ट में रजिस्टर कर लो, जैसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स है, so that you can stay connected, या ऐसे वगैरह है, so that you can stay connected. और जब आपकी फर्दर ग्रेजुएशन होगी तो देन यू कैन टेक द फुल पैकेज, सारी क्लासेस उसमें अच्छी तरह से पढ़ लो और then you can clear. Don't worry about that. What I am going to suggest you at this point, when you're about to graduate or going to graduate next year, start reading a few good books. Pakistan, a hard country, पढ़ लो. Pakistan beyond a crisis state, पढ़ लो. What else? Why nations fail, पढ़ लो. World order, पढ़ लो. अब न्यूज़पेपर रोज रोज पढ़ा करो. व्हाट एल्स, आप जो है अल जजीरा देखना शुरू करो, उसके ऊपर क्या न्यूज़, इसराइल क्या कर रहा है पैलेस्टाइन में, कश्मीर में क्या हो रहा है, पावर्टी दुनिया में, पानी कितना खत्म हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी क्या होती है, हमारे मुल्क को क्या क्या मसले हैं, IMF क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स क्या, फैक्शनल पॉलिटिक्स क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, आपका जुडिशरी सिस्टम क्या. स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, स्टार्ट गेटिंग क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स. तो फिर once you start preparing in 2025 या 4 जब भी आपने appear हो रहा है, तो once you start appearing you will have a strong enough foundation to begin with. How do we manage our time and make sure we don't waste any? Great question again, Mariam. You have to be very mechanical about it. आप अपने आराम, इट्स वेरी सिंपल, एक पेज और एक पैड उठाओ, उसके ऊपर अपना स्केड्यूल बना लो, दिन का टाइम टेबल बना लो. फॉर एग्जांपल माय टाइम टेबल व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CSS, आई यूज्ड टू, सिंस आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई थिंक कि आपका सुबह ठीक, मॉर्निंग जो है आपकी ठीक मतलब स्टार्ट ना हो तो आपका पूरा दिन जाया जाता है. तो आई यूज्ड टू वेक अप एट लाइक 7 एवरी डे. मैं शुरू करती थी प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर से. मैंने अपने लिए एक टारगेट रखना होता था कि मैं 2 घंटे प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में से ये पढ़ना है, ये प्रैक्टिस करना है. इवन दो व्हेन आई वाज बिगिनिंग माय CSS जर्नी, वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स वाज कि आई हैड रियली गुड ग्रामर, बिकॉज माय ग्रोइंग अप मैंने ग्रामर बहुत पढ़ी थी, रीडिंग भी मैंने बहुत की थी. बट देन अगेन आई वर्कड ऑन माय ग्रामर, आई स्ट्रेंथेंड माय स्ट्रेंथ.
ठीक है। तो आई यूज टू स्टडी प्रेस एंड कॉम्पोजिशन फॉर 2 hours एवरी डे। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो आई यूज टू पिक अप अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स उठा लिया या इस्लामियात उठा लिया या वट, उसको 3-4 घंटे के लिए टिल लंच टाइम 1 or 2 o'clock तक वो पढ़ती थी। अब ये नहीं था कि मैंने किताब उठा ली अब 3-4 घंटे मैं किताब को देखूंगी, नहीं, डिवाइड करो कि मैंने इस हफ्ते में मेरे टारगेट्स ये है, मैंने इतने टॉपिक्स जो है इस हफ्ते में कवर कर लेने, ठीक है। एंड देन मेक श्योर यू डू दैम। आपको ऑल नाइटर्स भी पुल करने पड़े, बट मेक श्योर कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करो। फिर उसके बाद आई यूज टू रेस्ट फॉर अ बिट। उसके बाद मैं कोई कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लेती थी, 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए वो पढ़ लिया। रात को सोने से पहले आई यूज टू, चूंकि मैंने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की थी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मुझे मैथ का पोर्शन और वो जो आपके एनालिटिकल या लॉजिकल एबिलिटीज वगैरह का पोर्शन है, मुझे उसमें मुझे पता था कि मेरी वीकनेस है। सिंस आई डू स्मॉल मिस्टेक्स, नहीं होती प्लस माइनस वाली मिस्टेक्स मुझसे अक्सर हो जाती हैं, तो आई यूज टू गिव अ गुड सॉलिड 1.5-2 hours टू जनरल साइंस, उसका स्पेशली वो मैथ और वो जो मैथ और जनरल एबिलिटी का पोर्शन है मैं उसको थोड़ा टाइम देती थी, अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करती थी। फिर उसके बाद बिफोर गोइंग टू स्लीप आई यूज टू रीड एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स। फिर इतना था कि मुझे फिर नींद नहीं आती थी, आई यूज टू डिप्लोमैट देख लिया, फॉरेन अफेयर्स देख लिया, फॉरेन पॉलिसी देख ली, अल जजीरा देख लिया, उस पर क्या क्या चल रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते हैं। फिर आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग द राइटर्स कि अच्छा ओ ये वाला राइटर इस तरह की चीजें लिखता है, मुझे ये पसंद है, मैंने इस तरह की चीजें पढ़नी है, या ये जो है पाकिस्तान से रेलिवेंट है या इस CSS से रेलिवेंट है या नहीं। तो दैट इज हाउ, अच्छा उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें, जैसे आई रिमेम्बर द फर्स्ट एवर आर्टिकल दैट आई रेड इन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, उसमें पहली लाइन में था कि thucydides ट्रैप के बारे में था। उस वक्त मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ पता नहीं था, आई जस्ट गूगल्ड क्या होता है thucydides ट्रैप, और वहां से आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर एंड मोर कि अच्छा ये वन नेशन राइजेस तो ये होता है वो होता है, एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी एट दैट पॉइंट। देन आई रेड एंड रीरेड दैट आर्टिकल, एंड देन आई यूज्ड टू रीड every article with so much zeal कि अच्छा इसमें मुझे ये नया मिलेगा। Then I used to Google things and I used to write them in my notepad with myself। मेरे फोन में ही नोटपैड होता था, हर किसी के फोन में है, आप अपने वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हो। तो अगेन आपके अपने विगर पे, आपके अपनी इंथुजियाज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने घंटे किस चीज के लिए यूज। बात ये कि आपको कितना पसंद है, हाउ मच यू वांट टू अचीव योर गोल, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। Acha, is there online session as well or just physical classes will be conducted? Waqar, this is an online platform for now. यहाँ पे physical classes नहीं है. This again online sessions आपके लिए मैंने एक बहुत monologue में आपको explain किया कि online sessions आपके लिए क्यों important है या आपके लिए फायदेमंद क्यों हो सकते हैं. But CAS right now is only an online platform जिसमें online classes होती है. You sign up for online classes. अच्छा हबीब, एज लिमिट जो है ना, आपने ऐसे करना है, आपने जाना है गूगल खोलना है, गूगल के ऊपर लिखना है fpsc.com.pk, उसके ऊपर आपने CSS वाला सेक्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करके देखना है CSS के रूल्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, आपका एज कौन सा। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट बाय द वे एज अ टीचर। आप, आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट अ टीचर, आधे घंटा का तो लेक्चर मैंने आपको दे ही दिया है। तो पहला असाइनमेंट एज अ टीचर जो मैं आपको दे रही हूँ, गो टू FPSC's वेबसाइट, आप वो डाउनलोड करो उसके रूल्स CSS के। उसमें एज लिमिट के बारे में भी आपका सवाल है, आप कौन सा कोटा कितना है, आपने किस सिटी से बैठना है, आपका सेंटर कहाँ से होगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारे सवाल आपके उसमें, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, डिग्री में कौन सा ग्रेड होना चाहिए, ये सारे आंसर्स आपको उधर से मिल जाएंगे। दूसरा, द सेकंड थिंग दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज डाउनलोड FPSC के वेबसाइट से CSS का सिलेबस। उस सिलेबस में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू एक मिल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स में एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। CSS ऐसे नहीं है कि बस जाके कहते हैं तुक्का मार लिया, लग गया तो लग गया, जाके पेपर में बैठ जाओ, ऐसे तो नहीं होता ना बच्चों। यू आर लिविंग इन 2023, आपके पास हाथ में स्मार्टफोन है, ऐसी बातें तो आप नहीं कर सकते ना। आपने जाके सिलेबस देखना है कि आपसे एग्जामिनर मांग क्या रहा है, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स में क्या आना चाहिए, आपको जर्नलिज्म में क्या आना चाहिए, अगर आप पंजाबी ऑप्ट कर रहे हो उसमें आपको क्या आना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट कर रहे हो उसमें आपके पास किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एनालाइज करो कि दिस इज योर फर्स्ट एनालिसिस दैट यू आर गोइंग टू डू, कि आप एनालाइज करो एग्जामिनर क्या चाहता है।
ठीक है, फिर आपके लिए वेल सूटेड कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। और फिर कल जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का वेबिनार है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसे हवा में तीर मारने ना आओ ना, आप पहले तो प्रिपेयर हो क्या, सिलेबस देख के आओ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम तो देख के आओ कि मुझे नाम कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, फिर आप वेबिनार में आओ, फिर आप देखो कि वो आपके लिए कौन सा वेल सूटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट है। Okay. Acha, Noor says she used to listen to Sir Aftab and Sir Dawood Salimi. They're both my batchmates, by the way. Sir Aftab Azeem is my husband. She used to listen to lectures on YouTube, self-study, and have started Pakistan Affairs and General Science Ability, even used to make notes, but now want proper mentoring. Acha, yahi baat hai, just hop onto the platform. What are you waiting for? Aap join kar lo CAS, and then you can start your CSS journey. अच्छा, any book or source for grammar, best grammar book? ग्रामर के लिए एक तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड की जो बुक है ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड बुक। रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बुक बहुत अच्छी है। यार एक सीधी बात बताऊं, अगर आपने बेसिक ग्रामर, आपके छोटे बहन भाई है ना, 10th में होंगे, 9th में होंगे, 8th में होंगे, उनकी ग्रामर की बुक है, छोटी सी ग्रीन कलर का कवर होता था एक, वो ग्रामर की बुक भी अच्छी है। क्या मैं आपको फैंसी किताबें सजेस्ट करूं कि जाओ अब 2-2 हज़ार की किताबें लेके आओ? आपके पास मेक डू विद योर रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट एट हैंड। आपका गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। लैपटॉप तो है ना, आईपैड है, फोन है, कुछ तो है, उठाओ, उस गूगल करो मॉडिफायर क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंसेस क्या है। कोई भी ग्रामर बुक जाओ मार्केट से उठा लो। आपके पास सजेस्टेड बुक्स जो है प्रेसियन कॉम्पोजिशन की, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रामर बुक्स जिसमें आप कोई भी ग्रामर बुक उठा सकते हो। जस्ट पिक अप अ बुक, स्टडी दैट बुक, देखो कि वो बताना क्या चाह रहा है उसमें। हमारे बचपन में ना 5th क्लास में, आई डोंट नो, ये जो 5th 6th में ग्रामर की बुक होती थी, उसमें दे आर ईटिंग एप्पल्स, वो सेब खा रहे हैं, वो सेब नहीं खा रहे, क्या वो सेब खा रहे हैं, इसकी ट्रांसलेशन करवाते थे हमसे। तो उस टाइम तो मैं क्योंकि बहुत ग्रामर पढ़ी थी बचपन में, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत पढ़ाई है, तो उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्या न्यूरोटिक सवाल है कि एक सांस में शुरू हो गए, वो ये काम कर रहे हैं, वो ये काम नहीं कर रहे, क्या वो ये काम कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू लाइक वो यू हैव टू ट्रांसलेट हर टेंस का। इतना उसका फायदा होता है कि मुझे ख्वाब में भी टेंसेस आते हैं। अगर मुझे नींद से उठा के टेंस का पूछ लो तो आई कैन टेल यू कि इस टेंस में ये होता है, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये गलती है, अगर कोई सेंटेंस दिखा दो या इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है तो वो भी मैं कर दूंगी, बिकॉज आई प्रैक्टिस सो मच। अब मेरे से बेहतर लोग भी हैं जिन्होंने मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस की, एंड यू कैन बी दोज पीपल। जस्ट प्रैक्टिस। आपको कहीं से ग्रामर की रिसोर्स मिल रही है ना, ग्रामर तो कहीं से भी हो सकता है, जस्ट गेट वन गुड ग्रामर बुक और शुरू हो जाओ, शुरू से लेकर एंड तक। ऑल्सो कम टू माई प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन क्लासेस, आई विल इंश्योर कि आपकी ग्रामर में कोई मसला ना रहे, आई विल इंश्योर कि आपके पास रूल्स की कोई कमी ना रहे। हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्विज भी हो जाएंगे, फीडबैक भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिक्र ना करो। प्रेपरेशन के हवाले से एक क्वेश्चन है, पहले ऑप्शनल और कंपल्सरी स्टार्ट करें? देखो, इट इज टोटली अप टू यू। अगेन, हर किसी की जर्नी यूनिक है। मैंने आपको अपनी स्केड्यूल बताया, तो मैंने कंपल्सरी भी पढ़ा, ऑप्शनल भी पढ़ा, हर चीज पढ़ी, ठीक है, और साइड वाली रीडिंग भी की। तो अगेन इट इज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम पहले एक सब्जेक्ट पढ़े पूरा, फिर दूसरा पढ़े, फिर तीसरा पढ़े, तो अच्छी तरह से कवर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे दिन में थोड़े चेंज चाहिए, मैं सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ूं, बाद में। व्हाट आई थिंक इज टेक ईच एंड एवरी थिंग टुगेदर। जैसे आप प्रेसी को और इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इनको ना छोड़ो, इनको कंसिस्टेंटली करते रहो। फिर एक कंपल्सरी के 2 टॉपिक्स एक दिन में कर लिए, एक ऑप्शनल के 2 टॉपिक्स एक दिन में कर लिए, उसको खत्म करो, उसकी क्लासेस रेगुलरली लो, उसकी क्लासेस खत्म करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट कास वी डू नॉट ड्रैग सब्जेक्ट्स। ये नहीं होगा कि एक क्लास होगी फिर 2 महीने बाद दूसरी क्लास होगी, बीच में 6 और क्लासेस हो जाएंगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पिछली क्लास का कुछ याद नहीं है। एक सब्जेक्ट हम आप एक को एक गो में पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको 10 to 12 लेक्चर्स में खत्म कर दें, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के ऊपर जरा ज्यादा टाइम लगता है। तो आपके पास 12 दिन होते हैं, मैक्सिमम 15 दिन होते हैं, जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। फिर आप आराम से बैठ कर उसकी रिविजन करते रहो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, पास पेपर्स की, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, आई थिंक आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, सर आफ्ताब इज वेटिंग, तो आई एम गोइंग टू हैंड दिस
platform over to you, Sidra, so that you can call him. See you guys hopefully Sure, in ma'am. my classes, inshallah. Have fun. Allah Hafiz. Thank you very much, ma'am, for your precious time. Okay, students, now I would like to invite Assistant Commissioner Sir Aftab Azeem, an extraordinary bureaucrat from 48th Common Training Program with a background of Chartered Accountant, currently serving as Assistant Commissioner in Inland Revenue Services. Sir, am I audible? Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, sir, we can. Ji, Sidra. Thank you very much. Thank you for introducing me. Thank you, sir. Session is over to you, sir. Okay, thank you. Assalamu alaikum, everyone. This is Aftab Azeem, Assistant Commissioner Aftab from Inland Revenue Service. I'm currently posted in RTO Rawalpindi, तहसील गुजर खान, और मुझे बताया गया था कि आपको मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है. तो बैकग्राउंड मेरा ये है कि I've done my matriculation from Girls and Academy for Boys लाहौर से, then I went to FC College. उसके बाद I went into chartered accountancy वाली field, did my ACCA, CFA level 1 Oxford Brook से मैंने bachelor's किया. Then I went for CSS examination. CSS एग्ज़ाम का जो 2019 की अटैम्प्ट थी मैंने वो दी थी, और 2018 में जुलाई में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और जुलाई से लेके फरवरी तक 6-7 महीने बनते हैं, इन्हीं में मैंने तैयारी की थी. तो 2019 अटैम्प्ट में ही आई क्लियर माई एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद एलोकेशन मेरी हुई थी 2020 में. तो दिस इज़ हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर एनी एस्पायरेंट टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस. और आई वुड प्रेफर कि यहाँ पे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं हु आर प्रेजेंट इन दिस सेशन, दे आस्क मी डायरेक्टली क्वेश्चन जो भी हैं. तो आई वुड प्रेफर दैट, बिकॉज मुझे इस तरह लगता है कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ. इज दैट पॉसिबल? Yes, sir. Students can unmute और वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग वन बाय वन करके अपने आप को अनम्यूट करें और सर से आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई शुड बी जॉइन सिल्वर सर्विस बाय सजाद इकबाल. अच्छा सजाद, दिस क्वेश्चन इज समथिंग यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ, because if you don't know this, the answer to this question, why are you even, people ask themselves. और CSS एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे you don't do it because your parents ask you to do it or your friends ask you to do it, because it requires a lot of motivation. CSS में जो motivation आपको चाहिए वो उसके बगैर you can't clear it. ठीक है. पाकिस्तान की सिविल सर्विस अभी इसकी ये सिचुएशन है कि a lot of people have already left Pakistan. Either they're going for certain jobs abroad जहाँ पे उनको ज़्यादा lucrative salaries मिल जाती हैं. This is true. ठीक है. लेकिन to be in पाकिस्तान में either you can either go for a business background or you can either go for a very good job किसी multinational company में. But being a civil servant gives you that autonomy, that authority in Pakistan, जो आपको पाकिस्तान में रहते हुए वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा that you can do something in Pakistan. And दूसरी रीजन ये है कि if you want to stay in Pakistan, there are only a few areas which you can actually excel at and be happy about it if you stay in Pakistan. Businesses के क्या हालात हैं और jobs के क्या हालात हैं. I'm being very straightforward with you, because यहाँ पे a lot of people would say कि you should serve your country, you should definitely serve your country, but as a career prospect भी आपको इस चीज़ को देखना चाहिए. सर जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सर आई हैव टू क्वेश्चन. हाँ जी. सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी to become a good CSP officer, and sir my second question is which by sir हम किस resources के through sir we prepare our MPT test. तो सर आपका नाम क्या है? सर my name is अदनान अली. अच्छा अदनान, पहली बात तो ये कि हमारे एक सर हुआ करते थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी CSS की, वो कहा करते थे कि CSS करने
है ना, आपने अफसर बनना है सीएसएस में, तो आपको अफसर पहले बनना पड़ता है और सीएसएस बाद में होता है। इस चीज का मतलब, इस बात का मतलब आपने जरा समझना है। इस बात का मतलब ये है कि आपको उस ऑरा में आना पड़ेगा, आपको अपनी मेंटेलिटी को बनानी पड़ेगी कि आपने उठते बैठते इसी तरह इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अखबार इस तरीके से पढ़ना है, लोगों से बात इस तरीके से करनी है, और अपने कैलिबर को उस लेवल पे ले जाना है कि आप जब लिखने बैठे तो आपको याद ना करना पड़े कि आपने किस चीज का रटा लगाया था। आपके जहन में ऑलरेडी वो चीजें हों, आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप कोई पेपर लिखने बैठते भी हो तो आपको पता है कि आपका एनालिसिस उसकी उस चीज पे क्या है। दिस इज द क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सीएसपी ऑफिसर। मैं ये नहीं कहूंगा एस्पायरेंट, फ्रॉम एन ऑफिसर, बिकॉज आप लोग सारे जो हो बीइंग एस्पायरेंट्स, यू आर हियर टू बिकम ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका जरा रिपीट कर दें, आपका क्या था क्वेश्चन? सर वो एमपीटी के बारे में था सर, भी हम कैसे तैयारी कर सकते हैं सर? अच्छा, एमपीटी का अदनान आपने ज्यादा फिक्र नहीं करनी। एमपीटी जो है ना वो दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है, आप एमपीटी मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत रैंडम होते हैं। ठीक है, और आप सारी कंप्लीटली 100% तैयारी एमपीटी की नहीं कर सकते। जस्ट मेक श्योर कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एमसीक्यूज के कोई बुक्स आपको मिल जाती हैं मार्केट से, वहां से आप उनको प्रिपेयर कर लें, या आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा प्रिपेयर कर लें, इंग्लिश पैसे का पोर्शन थोड़ा प्रिपेयर कर लें। लेकिन देन अगेन वहां पे जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ एमपीटीज का, वो रिसेंटली 1-2 सालों से वो आई थिंक 90% अबव जो लोग हैं वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बहुत से तरीके भी होते हैं, तो वो मिस एमन जो है वो आपको इंशाल्लाह क्लासेस में बताएंगी इन फ्यूचर। तो एमपीटी इज नॉट समथिंग यू शुड बी वरिंग अबाउट दैट मच। ये एक सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। आगे जो है वो असल चीज जो है वो सीएसएस के इम्तिहानात होंगे आपके लिए। थैंक यू सर। नूर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मरियम का क्वेश्चन आया हुआ है कि सर हाउ डिड योर सीए बैकग्राउंड हेल्प इन योर सीएसएस प्रिपरेशन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिकॉज मेरा सीए बैकग्राउंड था तो आई ऑप्टेड फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिट एग्जाम, जो कि 200 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे पहले कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखें, और आपको बार बार आपके मेंटर्स ये बता रहे थे कि आपको कल सेशन में बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्वालिफिकेशन किस एरिया में की हुई है, पॉलिटिकल साइंस में की हुई है, फिजिक्स में की हुई है, इंटरनेशनल रिलेशंस में की हुई है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि अगर तो आपका बैकग्राउंड है एंड यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट, और वो सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ यू कैन एक्चुअली स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन इट, तो आप डेफिनेटली वो जो सब्जेक्ट है वो ऑप्ट करें। वो इस वजह से क्योंकि आई ऑप्टेड फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड आई स्कोर्ड 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। नॉर्मली आईआर और पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम मार्क्स के जो आते हैं वो 110 120 आते हैं। यू नो दैट, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये होते हैं सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इस तरह के जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर तो आपका बैकग्राउंड है यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। और मरियम के क्वेश्चन का आंसर भी मैं इसी तरीके से दे रहा हूँ कि सीए का बैकग्राउंड ने मुझे इस तरीके से हेल्प किया था कि आई स्कोर्ड प्रीटी वेल इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, सर हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, मेनी टाइम्स वी थिंक इट इज टू हार्ड और वांट टू गिव अप। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैंने जब जुलाई में तैयारी शुरू की थी तो मैं आई स्टार्टेड गोइंग टू एन अकेडमी। शुरू शुरू में आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, आई एम फ्रॉम एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड। ठीक है, और जब आपको इस तरह की जनरल नॉलेज मिलना शुरू होती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, और रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, फलस्तीन में क्या चल रहा है, सीरिया में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यू गेट वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो हुआ ये था कि जुलाई में मैंने तैयारी शुरू की, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। लेकिन इवेंचुअली जुलाई अगस्त सितंबर में मैं आई स्टार्टेड गेटिंग डीमोटिवेटेड। मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, फिर मतलब आपका दिल भी नहीं करता पढ़ने को। what I did was I started reading a book, not related to the subjects, but a random book which was related with the current affairs or history of Pakistan, but it was also an interesting book. इससे ये हुआ कि मेरी attention जो है वो वहां से तो डाइवर्ट होगी, लेकिन दूसरी साइड पे भी I was somehow preparing for CSS। तो आप ये स्ट्रेटजी ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स नॉर्मल टू गेट डीमोटिवेटेड, बीच में कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी लूज भी होती है,
लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो स्टेबल रहनी चाहिए। अच्छा जी, मलिक वकास का क्वेश्चन है जी, सर शुड वी गो फॉर अनदर अटेम्प्ट व्हाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन? विल इट अफेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट एनीवे एज पर रूल्स एटसेट्रा? नो, इट वुड नॉट अफेक्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो, और अगर आप इफ यू थिंक यू प्रिपेयर्ड वेल और आपकी तैयारी पहली अटेम्प्ट से भी बेहतर हो गई है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट एज वेल, क्योंकि नॉट एवरीवन can actually, मैं ये नहीं कह रहा कि you wouldn't be able to clear this first attempt, लेकिन a lot of people clear the first attempt as well and second attempt में वो और भी अच्छा स्कोर करके तो किसी बेहतर ग्रुप में भी एलोकेट हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। अब सीएसएस एक ऐसा इम्तिहान है जहाँ पे आपने सिर्फ क्लियर नहीं करना एग्जाम, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है मार्क्स मैक्सिमम चाहिए, ताकि क्योंकि आप जो 40,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 20,000 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से आपने कम्पीट करना है उनके साथ। तो जितने ज्यादा आपके मार्क्स ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, और उतना ही बेहतर आपको ग्रुप मिलेगा जो आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I'm learning to this week and have a business background. But right now, I have to give a exam in 2025. Actually, आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। आप, आई हर्ड दैट यू हैव अ can you hear बिजनेस me? बैकग्राउंड। One second. कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन द चैट? मुकद्दर साहब अपना पूरा क्वेश्चन बोलिए। सर ये कह रही हैं कि I'm a business graduate probably और CSS 2025 में ये अटेम्प्ट देना चाह रही हैं। ठीक है। अच्छा, बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट, कोई सर्टेन क्वेश्चन है या जस्ट वांट टू आस्क जनरली गाइडेंस? Sir, can you hear me? यस आई कैन। Okay. Sir, it's totally about this. Next year, so 2025 में, sorry 2024 में graduate होना है, उसके बाद just for 6 or 7 months have a time to stay in Pakistan, otherwise have other choice to move abroad. That's what I want. इसलिए मुझे अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी for a CSS and especially for a top groups, pass or foreign service or inland revenue. Sir, मैं almost from 3 to 4 months डिफरेंट जगह से सब आपके पर या जनरल साइंस फैकल्टी या इस्लामियात इट्स श्योर कि मैं किसी मेंटोर के पास नहीं गई थी, बट इतने पढ़ने के बाद आई सिलेक्टेड ओनली 2 mentors. First one you and a second also doubt streaming, but luckily today I seen your story और उसके बाद मैं यहाँ आई. No doubt is this session only for us 2024 students, but I want to join you for a 2025 and want my preparation from right now. आई एम रियली सॉरी, आपकी एंड से थोड़ी सी आवाज कट गई, आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। आपका जो लास्ट बात आपने की है, कैन यू रिपीट इट? सर मैंने लास्ट में कहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहती हूँ. मैं वेट नहीं ठीक है। करना चाहती कि आफ्टर नेक्स्ट सेक्शन आफ्टर 6 months है या आफ्टर 6 months है. आई वांट टू जॉइन यू एज अ प्रोपेयर फॉर 12 subjects. अच्छा, इसमें एक तो पहली बात ये कि इफ यू जॉइन अ सेशन राइट नाउ, 2025 की अटेम्प्ट से बहुत पहले होगा, लेकिन इट डजंट मैटर, क्योंकि नॉर्मली इस सिनेरियो में, सीएसएस की प्रिपरेशन के सिनेरियो में ये होता है कि वंस यू जॉइन अ सेशन एंड यू कंप्लीट अ सेशन, यू गेट दोस गाइडलाइंस व्हिच यू नीड देम टू एक्चुअली स्टडी अप्रोप्रिएटली, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जब स्टूडेंट सीएसएस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें गाइडेंस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है, क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप 2025 के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी है ना, तो इट इज एक्चुअली बेटर कि आप अभी से ही इस सेशन को लें, और अभी से अगर आप सेशन को एक बार कंप्लीट भी कर लेती हैं ना, इवन इफ यू हैव अ होल ईयर लेफ्ट टिल योर अटेम्प्ट, इट डजंट मैटर, बिकॉज आपने बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर सेशन ले लिया एंड यू नो हाउ टू एक्चुअली स्टडी फॉर इट एंड इवन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो आपके साथ आपके लिए जो गैप है सेल्फ स्टडी के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज इवन
अ बेटर ऑप्शन फॉर यू अगर आप सेशन अभी लेती हैं, बट यू कैन डू कि आप सेशन अभी लें और नेक्स्ट ईयर जो है यू कैन ऑप्ट फॉर सम मॉक एग्जाम्स और इस तरह के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस एटसेट्रा। यू वेलकम। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, सर देयर आर सो मेनी थिंग्स इन रिटन टेस्ट, हाउ कैन वी रिमेंबर ऑल थिंग्स, ऑल्सो शेयर टेक्निक्स फॉर अटेम्प्टिंग आंसर्स इन रिटन एग्जाम। अच्छा असरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वट एवर यू रीड राइट नाउ you won't be able to remember it after a couple of months, ठीक है? तो इट डजेंट मैटर कि अगर आप कोई चीज भूल जाती हैं तो व्हाट यहाँ पे स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने एक चीज को, फॉर एग्जांपल एक सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट का जो टॉपिक है, आपने सिर्फ एक बार उसे पढ़ा आर्टिकल से, फिर आपने दूसरी बार यूट्यूब पे उसे देखा, फिर अपने मेंटोर से उसे समझा, फिर आपने किसी अखबार के आर्टिकल में उसे पढ़ा। आप जब एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगी ना और बार बार उसे समझेंगी और डिफरेंट एस्पेक्ट से समझेंगी, बशार अल असद के एस्पेक्ट से समझेंगी, फिर रशिया के एस्पेक्ट से समझेंगी, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक वेरी डेलिबरेटली, ठीक है? जब आपको ये चीजें रिपीटेटिवली चीजें समझ आती है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप आज अखबार में डॉन में या एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल पढ़ेंगी और नेक्स्ट वीक में वही अखबार दोबारा लेंगी, तो आपको नजर आएगा कि उसी टॉपिक पे वो जो आर्टिकल था वो चीजें सारी पुरानी थी लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐड हो गई, ठीक है? तो इससे होता ही है कि जब आप रेपिटेटिवली अपने जहन में ये चीजें डालती हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो बाय द टाइम जब आपका एग्जाम आता है तो आपको ये फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या याद रहा, क्या भूल गया। आपके जहन में ऑलरेडी वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से बैठी होती हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो स्टडी करने की वो इस तरह होनी चाहिए कि यू डोंट जस्ट प्रिपेयर वन टॉपिक एंड जस्ट लीव इट, यू जस्ट कीप इम्प्रूविंग इट फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिफरेंट सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज। अच्छा जी, सर अगर एज अब 29 ईयर हो तो 2025 में अपीयर हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें रूल ये होता है कि 29 ईयर्स ऑफ एज अभी करंटली है तो दिसंबर में आई थिंक कट ऑफ डेट होती है। अगर आप एफपीएससी की साइट पे अगर निकालेंगे ना उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा होगा, उसमें से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट यू सजेस्ट फॉर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉर दे कंप्लीट फर्स्ट दे कंप्लीट देयर बैचलर्स प्रोग्राम और कंटिन्यू बोथ यूनिवर्सिटी एज वेल एज प्रिपरेशन। Acha, I know a lot of people who started preparing for CSS during their university because काफी लोगों को already they have planned कि उन्होंने CSS के लिए peer होना है, वो वेट नहीं करते ग्रेजुएशन का। वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका बैचलर्स कंप्लीट हो, लेकिन आई हैव नोन पीपल इन अ यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जिसने खुद बीए करके, मतलब यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन नहीं की, मतलब प्राइवेट बीए करके सीएसएस का अटेम्प्ट दिया और उसने क्लियर कर लिया और बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड ही वाज ऑलरेडी ए सीएसपी ऑफिसर, ठीक है? तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहते हैं तो प्रिपेयर आप ये देख लें कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखने हैं, आप उसकी तैयारी डेफिनेटली शुरू करें, आपके लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, एंड बाय द टाइम यू ग्रेजुएट तो फिर आप अप्लाई करके फिर अटेम्प्ट भी करें। नोट्स मेकिंग के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? अच्छा, नोट्स के लिए नबिया अप्रोच ये है कि इट्स अप टू यू। अ लॉट ऑफ पीपल मेक देयर नोट्स ऑन लैपटॉप्स, टैबलेट है, फोन है, आप उन पे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएस चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या पाकिस्तान का, जिस तरह आईएमएफ का भी डील अभी अप्रूव हुई है और इसका बहुत मतलब काफी अरसे से इशू चल रहा है, और अफगान और पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है, मतलब इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। तो ये अप्रोच एक बहुत अच्छी होती है कि आपने प्रिपरेशन की, उसकी उसके नोट्स फैक्ट्स उसके लिख लिए, उसकी सारी जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारा नोट्स में बना लिया। व्हाट यू कैन डू इसके जैसे जैसे वो अपडेट्स आए, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन के दिन होते हैं ये 3-4 दिन नहीं होते,
ठीक है। ये आपको कोई 5 6 7 8 मंथ्स लग जाते हैं, तो 8 मंथ्स में बहुत ज्यादा अपडेट्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो जाती हैं करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो आप जैसे जैसे वो अपडेट्स आए वो उन नोट्स में ऐड करते जाएं। अगर आपने रजिस्टर पे भी लिखा हुआ है तो जस्ट ऐड दोज अपडेट्स इनटू दोज नोट्स। और ये चीज आपने एक हमेशा याद रखनी है कि जोन से मर्जी सब्जेक्ट्स हैं, जितने मर्जी एग्जाम्स हैं सीएसएस में, करंट अफेयर्स ऑलवेज मैटर्स। इस वजह से क्योंकि आपका इस्लामियत का एग्जाम होगा, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका जेंडर स्टडीज पे एग्जाम होगा, उसमें भी करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आएगा, इवन दो दैट वुड बी रेलेवेंट टू जेंडर स्टडीज, लेकिन करंट अफेयर्स पे आएगा। आपका यूएस हिस्ट्री में होगा, उसमें भी करंट अफेयर्स पे आएगा। तो सबसे ज्यादा आपके जो फोकस है ना, वो एक तो सबसे पहली बात ग्रामर, ठीक है, और दूसरा करंट अफेयर्स पे होता है। और नोट्स भी आपने इसी तरीके से बनाने हैं कि नोट्स साथ साथ आपने अपडेट करने हैं। ये नहीं कि एक टॉपिक आप कि आपने नोट्स बनाए तो आपको उसको आपने रख लिया और उसको आपने रटा लगा लिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक सवाल आया है कि कुछ लोग कहते हैं हम 3 महीने में पढ़ के पास हो गए और कुछ सालों में क्लियर करते हैं, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। अच्छा, इसके पीछे स्टोरी ये है कि आई हैव आई स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जुलाई। जुलाई से लेके जुलाई अगस्त मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की। फिर मेरा वही वाला फेज आ गया जो आपने कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। डीमोटिवेट नहीं हुआ था, लेकिन आई गोट लेजी, ठीक है। 1 2 महीने मैंने वैसी डिफरेंट रैंडम किताबें पढ़ी। आई आई रेड पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री विच इज अ वेरी बेनिफिशियल बुक फॉर सीएसएस एस्पायरेंट्स। आई रेड कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। मैंने इस तरह की बुक्स पढ़ी, मैंने कोई रैंडम नॉवल उठा के नहीं पढ़े, या कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी जिसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं था ना सीएसएस के साथ। तो इसमें ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी टूट भी जाए तो यू जस्ट कीप रीडिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। और फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो इसमें ये नहीं है कि आपको 7 8 महीने हैं तो आपने कॉन्टिन्यूसली सुबह 7 बजे से लेके तो रात को 9 बजे तक आपने बैठ के पढ़ना है। साथ अपने दोस्तों के साथ भी बैठना है। और आपने साथ, इफ यू वांट टू प्ले गेम्स जस्ट प्ले गेम्स, इफ यू वांट टू वॉच टीवी। मतलब ये है कि आपने अब हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है ना। कोई शख्स सुबह से बैठ के 7 बजे से बैठ के 9 बजे तक पढ़ सकता है, लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोस गाइस। मेरा ये है कि मैं आधा घंटा पढ़ लूँ, मैं थक जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आधे घंटे बाद तो आई जस्ट कीप रोमिंग अराउंड। लेकिन ये है कि उसमें ये है कि अगर आधे घंटे में पढ़ा हूँ और 1 घंटा वैसे टाइम जाया करके हैं, तो देन आई अगेन कम बैक एंड स्टार्ट स्टडिंग। लेकिन एक स्ट्रेटजी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, वो ये कि आप टारगेट सेट करें कि आपने एक दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं, ये इतने चैप्टर्स करने हैं, या इस सब्जेक्ट के इतने एरिया जो है आपने कवर अप करने हैं। दैट वुड हेल्प यू आउट। उसमें फिर ये है कि आपके ऊपर ये नहीं है कि आपने सुबह से लेकर रात तक पढ़ना है। आप जिस मर्जी टाइम पे करें, आज नहीं कर सकते तो कल पूरा करें, कल नहीं कर सकते तो परसों पूरा करें, लेकिन अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव करते रहें साथ साथ, ठीक है। और 3 महीने की जो बात है, वो 3 महीने में डेफिनेटली यू कैन क्लियर एग्जाम्स, इट्स नॉट ए मिथ। लेकिन 3 महीने ऐसा नहीं कि आपने जीरो से स्टार्ट किया और कंप्लीट कर लिया। ऑब्वियसली लॉट ऑफ बैकग्राउंड मैटर्स एज वेल। ग्रामर पे कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, कुछ लोगों को करंट अफेयर्स पे टाइम लगाना पड़ता है, कुछ लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे, किसी सर्टेन एस्पेक्ट्स पे टाइम लगाना पड़ता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 साल में कंप्लीट पढ़ाई करेंगे तो फिर पास होंगे, या 3 महीने में करेंगे, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपने कितनी नॉलेज ग्रैस्प की, आपने किस तरीके से उसे अटेम्प्ट किया। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। अच्छा जी, अब्बास खान का क्वेश्चन है जी, सर आप इंडिविजुअल स्टडी प्रेफर करते हैं या डिस्कशन डिबेट विद फ्रेंड्स? अच्छा अब्बास, ऐसा है कि यू नीड बोथ ऑफ देम। इस वजह से कि आप एक अप्रोच के साथ लेके नहीं चल सकते इसको, ठीक है। 8 9 महीने की तैयारी जो है उसमें आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप लोगों से डिस्कशन भी करें। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले सेल्फ स्टडी करें, अकेले बैठ के पढ़ें एक टॉपिक को, फिर बाद में जाके दोस्तों से आप डिस्कस कर लें, ठीक है। जो पॉइंट्स आपके पास होंगे और दोस्तों के पास नहीं होंगे, वो दोस्तों को समझ आ जाएंगे, और जो दोस्तों के पास होंगे आपके पास नहीं आएंगे, वो आपको समझ आ जाएंगे। तो इसमें तो दोनों अप्रोच आपको लेके चलनी पड़ेगी। इसमें कोई एक सर्टेन अप्रोच नहीं है जिसको आप मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। Okay, sir. Thank you very much, sir, for your precious time. आपने
Sir, there is a last question from Javeria Qureshi. Question is, would you recommend joining an academy and going to attend classes daily or self-studying? Acha Javeria, it depends on your situation. Is it convenient for you to go and attend classes physically? Is it convenient for you to attend online classes? Is it convenient तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर recommend करूँगा कि you join a certain session either online or physical classes for a certain time या पूरे batch के लिए, because that's how you get to know a lot of people who are preparing like you. You get to learn a lot of things from them and you get to teach them a lot of things as well. ठीक है? उसके साथ साथ आपको रिसोर्सेज का पता चलता है. बाकी लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो वो काफी सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो उनको पता होती हैं, आपको नहीं पता होती. ठीक है. और अगर आप ऑनलाइन करना चाहती हैं, इफ दैट्स कन्वीनियंट, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल. उसके जरिए भी आप तैयारी कर सकती हैं. आप फिजिकली जा सकती हैं तो फिजिकली भी जाएं, लेकिन इट्स में कोई स्ट्रिक्टली आपने फॉलो नहीं करना कि आप मतलब फिजिकली जाएंगी तो क्लियर करेंगी या ऑनलाइन अटेंड करेंगी तो क्लियर करेंगी. इट्स अ वेरी वीक सब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा जी, सजाद इकबाल साहब का सवाल है जी, हाउ टू हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग द ग्रुप सिलेक्शन, व्हिच ग्रुप शुड वी कीप इन माइंड, योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन दिस वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड. अच्छा सजाद, ग्रुप अगर आप CSS के 12 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप सिलेक्शन की, तो वो तो उसका स्टेज अभी नहीं है. ठीक है. यहाँ पे मेरिट बनता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसकी बेसिस पे जो है वो आपको ग्रुप्स मिलते हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि आपने 2 स्टेजेस पे ग्रुप सिलेक्शन का बताना होता है वहां पे FPSC को. एक तो जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हो, दूसरा जो फाइनल आपकी डिसीजन होता है ना, वो जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं. ठीक है. तो अभी तो बहुत टाइम है ग्रुप सिलेक्शन में. उस वक्त तक अगर फिर भी आप यू वांट टू बी कंसर्न्ड अबाउट ग्रुप सिलेक्शन, तो आप ऐसा करें कि आप डिफरेंट ग्रुप्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं ना, उनसे कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करके मिलें. आप उनसे पूछें कि आपके ग्रुप में क्या क्या है जो दूसरे ग्रुप में नहीं है. ठीक है. तो ये सबसे बेहतर तरीका है ग्रुप्स को गेज करने का. किसी रैंडम बंदे की बातों पे ना जाएं, क्योंकि काफी सारी ऐसे सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के जो सिर्फ उसके अपने ऑफिसर्स ही बता सकते हैं. तो दिस इज द बेस्ट वे टू गेज ग्रुप्स. लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ग्रुप्स. वो बहुत बात की बात है. ठीक है. Thank you very much, sir, for your precious time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, aspirants, I would like to extend my gratitude to all the participants who have joined us today. If you are interested in joining our July batch, admissions are open and regular classes will commence from 17th of July 2023, Monday onwards. Okay. Orientation session भी होंगे आपके multiple subjects के, और especially essay का कुछ students ने जिन्होंने पूछा ऐसे के बारे में. ऐसे का ओरिएंटेशन सेशन होगा. ओरिएंटेशन सेशंस के अनाउंसमेंट वगैरह कल कर दी जाएगी. ठीक है. Tomorrow we have another exciting and final webinar for this July batch featuring Ms. Zarmish Javed and Sir Aftab Khan, who will be sharing and discussing जुलाई बैच की nitty-gritties को डिस्कस करेंगे वो. इसके अलावा आपके साथ they are going to share critical analysis, CSS basics, jargons. They are going to suggest you guys recommended books or reading material जो अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है. इसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स आपके साथ शेयर होंगी. टाइम टेबल डिस्कस होगा. शेड्यूल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. ठीक है. सब्जेक्ट सिलेक्शन के 1-to-1 सेशंस होंगे, तो आप लोग अपने आप को उससे पहले रजिस्टर करवा लें. एडमिशंस आर ओपन. एडमिशन रिलेटेड जो है, जो भी क्यूरीज हैं आपकी, वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन इवन unmute yourself and you can ask here also. So admissions are open. 17 July onward we are going to have our regular classes.